हाय फ्रेंड्स वेलकम टू बीएस स्मार्ट एकेडमी। आज आम मैंने कंप्यूटर फंडामेंटाल इनपुट यूनिट रो न्यू सीरीज स्टार्ट करवा जहाँकि आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल रहिबो। जो मैंने आम यूट्यूब चैनल बीएस स्मार्ट एकेडमी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आम स्टार्ट करवा इनपुट यूनिट रो किछिटा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, which unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Option कौन देला? Option A देला memory unit, Option B देला arithmetic and logic unit, Option C देला input unit, Option D देला output unit. Right answer हबो Option C input unit. Next question देखिबा question number 2, the only language which the computer understand is को लैंग्वेजटा आमर कंप्यूटर बुझी पारे? ऑप्शन कौन देला देखिबा? ऑप्शन ए देला असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी देला बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी देला बेसिक, ऑप्शन डी देला सी लैंग्वेज. राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन बी बाइनरी लैंग्वेज. आमर कंप्यूटर को लैंग्वेज बुझी पारे? बाइनरी लैंग्वेज. द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली binary language which is written in from 0 and 1. 0 and 1 को से बुझी पारे, सेटा को कहा जाए हमरो बाइनरी लैंग्वेज. 0 and 1 एटा हला बाइनरी लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज. ऑप्शन ए देला बाइट, ऑप्शन बी देला निबल, ऑप्शन सी देला बीट, ऑप्शन डी देला केबी. राइट आंसर हम ऑप्शन सी बीट. आंसर सी हो राइट आंसर. द स्मॉलेस्ट यूनिट बीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स. ऑप्शन ए देला 2, ऑप्शन बी देला 4, ऑप्शन सी देला 8, ऑप्शन डी देला 1. राइट आंसर हम ऑप्शन बी 4. राइट आंसर हम ऑप्शन बी 4. One nibble is equivalent to 4 bits. Next question number 5. Which of the following describes the correct format of an input instruction? Option A देला in 82, option B देला input 82, option C देला in 82, option D देला 82 INP. राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन ए हो राइट आंसर IN82. ऑप्शन ए हो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इनपुट मशीन which originated in the United States around 1880 is a dash. ऑप्शन ए देला माउस, ऑप्शन बी देला जॉयस्टिक, ऑप्शन सी देला कीबोर्ड, ऑप्शन डी देला बारकोड रीडर. राइट आंसर हम ऑप्शन सी कीबोर्ड. राइट आंसर हम ऑप्शन सी कीबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर. कंप्यूटर कौन स्टैंड्स करे बा कंप्यूटर रो फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन देछि. ऑप्शन ए देला कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ऑप्शन बी देला कॉमनली ऑक्युपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ऑप्शन सी देला कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी देला कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. राइट आंसर हम ऑप्शन ए कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. ऑप्शन ए राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 योटाबाइट डैश. ऑप्शन ए देला 1024 TB, ऑप्शन बी देला 1024 EB, ऑप्शन सी देला 1024 GB, ऑप्शन डी देला 1024 PB. राइट आंसर कौन बा? क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर हम ऑप्शन सी 1024 ZB. राइट आंसर ऑप्शन सी 1 yottabyte is equal to 1024 ZB. 1 yottabyte is equal to 1024 ZB. Next question number 9, which of the following is not a function of the input unit? कोटा आमर इनपुट यूनिट रो फंक्शन हुए.
ऑप्शन ए देला इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ऑप्शन बी देला इट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ऑप्शन सी देला इट मेक्स द डाटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ऑप्शन डी देला इट सप्लाइज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर हम ऑप्शन सी इट मेक्स द डाटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लेबल द पार्ट्स 1 एंड 2। ये जो डायग्राम देइछि, ये जो डायग्राम रे 1 और 2 टा तार को पार्ट? ऑप्शन ए देला ए एल यू, 2 हैला एम यू। ऑप्शन बी देला 1 हैला आउटपुट यूनिट, 2 रे हैला इनपुट यूनिट। ऑप्शन सी रे देला 1 हैला एम यू, 2 रे हैला ए एल यू। ऑप्शन डी रे देला 1 हैला इनपुट यूनिट, 2 रे हैला आउटपुट यूनिट। तो ये डायग्राम रो पार्ट 1 और 2 रे कौन रही हमर? राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन डी है जो राइट आंसर। गोटे 1 रही इनपुट यूनिट आ गोटे रही आउटपुट यूनिट, मझे रही हमर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन डी। थैंक यू।